Good morning, dear student. I hope you all are fine at home. Okay, so dear student, welcome to the Maths online class. So student, I have started the review test 10. Okay, now up to question number 10 we all have done, and now today I'm going to solve the question number 11. Okay, now question number 11 is convert. Okay, it is what? Convert. You are going to do the convert 1000 gram to kilogram, means 1000 gram to kilogram. ओके, किलोग्राम मीन्स ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम वी आर गोइंग टू डू द डिवाइड. we will divide by 1000. So 1000 gram to kilogram. So here you are going to write down 1000 divided by 1000. Okay, now it will become what? kg. Okay, 1000 divided by 1000. जब आप ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो kg में कन्वर्ट होता है. ओके, so it will come means 1000 gram is equals to 1000 gram is equals to 1000 divided by 1000 kg. तो it will come 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 को 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 1. ओके, तो इज इक्वल्स टू 1 kg. सो दिस इज द आंसर. तो इट इज क्वेश्चन नंबर ए. इट इज ए. नाउ बी. B1 is 3 kg 500 gram 2 ग्राम्स. ओके, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में. तो हेयर स्टूडेंट 3 kg को आपको कन्वर्ट करना है 3 kg इंटू 1000 ग्राम. अगर 3 kg को इंटू 1000 से आप करते हैं प्लस kg, वन मीन्स 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो 3 इंटू 1000 ग्राम. ओके, ये 1000 ग्राम हो गया प्लस 500 ग्राम. यहाँ फिर आप क्या करेंगे? 500 ग्राम. तो इट विल बिकम इज इक्वल्स टू, हियर इज 3, तो 3000 ग्राम. यहाँ इंटू मैंने किया तो ये 3000 ग्राम हो गया प्लस 500 ग्राम. ओके, तो इट विल बिकम 3500 gram. Okay, this one. Now number C. Number C is to convert 7 kg minus 3 kg to gram. Again, to 7 kg minus 3 kg to grams. Okay, to grams. तो student here आप इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं इन दिस वे. 7 kg माइनस 3 kg, 7 kg माइनस 3 kg इज इक्वल्स टू 4 kg. ओके, 4 kg. नाउ 4 इंटू 1000 ग्राम. जब 4 kg को इंटू हम 1000 ग्राम से इंटू करेंगे तो इट विल कम 4000 ग्राम. ओके, इट विल कम 4000 ग्राम. ठीक है, तो in this way you are going to do to solve. Very easy method I have used for you students, so please do it.
Done, student? Okay, now come to question number 12. Question number 12. Okay. Now see here, student. A shopkeeper bought 118 kg of apples and 69 kg mangoes. Okay. He sold 75 kg 500 gram of apples and 18 kg 750 gram of mangoes. Now find the total weight of fruit left unsold. तो here student you are going to do the means आप पहले क्या करेंगे कि total weight of apple and mango means fruit is equal to this. Okay, see here I'm solving. Okay, so now see the weight of apple plus mango. Okay, apples plus mangoes is equals to apples and mango भी आप लिख सकते हो apples and mangoes is equals to 118 kg plus 69 kg. तो is equals to 7, 8 and 1. Total 187 kg फ्रूट्स उसने मार्केट से शॉपकीपर ने खरीदा. ओके, बॉट. नाउ he sold 75 kg 500 gram plus 18 kg 750 ग्राम. ओके, इसने क्या किया, ही सोल्ड, इतना उसने एप्पल्स एंड मैंगो को सोल्ड करा. तो 0, 5, 12 कैरी 1, 13 and 1 14 carry 1, 9, 94 kg 250 ग्राम इसने सोल्ड किया फ्रूट्स. नाउ फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट अनलेफ्ट. नाउ टोटल weight of fruits left unsold. Okay, तो is equals to इतने kg में से आपको this kg you are going to do the subtraction is equals to 187 kg minus, तो स्टूडेंट माइनस मैं यहाँ कर दे रही हूँ 94 kg 250 ग्राम. ओके, so like this I am doing the subtraction here. So here will be 0 gram. Okay, here will be 0 gram as you all know. So gram 0, here 5, 9. So 9 and 7 kg 2, 9, 92 kg 750 gram fruits unsold. Okay, so do it.
Okay, done student. Now question number 13. Okay. Okay, question number 13. Okay, subtract. Subtract. Question is subtract 77 kg 60 gram from 344 kg. Okay, so here you are going to write down 3 4. First you are going to do write here kg and here gram. Okay, now kg 344 and gram 0 0 0. Okay, 30 will be there. Now 77 kg subtract 60 gram. Okay, now see 0 4 9. Okay, 9, then here it will come 6 6 2, means 266 kg 940 gram. This is the answer. Okay, question number 13. Now question number 14. Okay, add 6 kg 5 gram 256 kg 45 gram and 32 kg 50 gram. Express your answer in terms of grams. तो add करना है आपको, add. Okay, तो direct. Okay, now question number 14 is add. Okay, add. So see here student, I am writing directly 6 kg 5 gram is there, means here how many 0 2 0, यहाँ पे 2 0 रहेगा. Okay, then is 2 5 6 kg 0 4 5 gram. Okay, then 32 kg 0 5 0 gram. This is the question. Okay, तो प्लस करा मैंने. Here will come gram 10 carry 1 10 carry 1 1. Okay, kg 4 carry 1 9 and 2 294 kg 100 gram. Okay, now here ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 294 into 1000. Okay, ग्राम plus 100 ग्राम. Okay, 100 ग्राम. Okay, तो इनको इंटू करेंगे तो होगा आपका 294,000 plus 100 ग्राम. Okay, 100 ग्राम. तो it will come 294,100 ग्राम. ओके, ये आपका आंसर होगा. So do it.
Okay, done, student. So student, tomorrow is Thursday. Okay, so I will take the class through a live class. I will take the live class and I will start the chapter 11, that is the measurement of volume. Okay, हम लोग measurement of volume के बारे में पढ़ेंगे and we will discuss on Google this chapter tomorrow through Google Meet. Okay, so till then keep practicing and learning. Bye.